हेलो क्लास 8। आज आप लैंग्वेज में स्टडी करेंगे चैप्टर 4 मॉडल वर्ब्स। देखिए मॉडल वर्ब्स आल्सो नोन एज मॉडल एक्सिलरीज। सो एट्रीब्यूट्स लाइक पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, परमिशंस एटसेट्रा। यानी मॉडल वर्ब्स में आपको ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है। क्या क्या? पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, परमिशन एटसेट्रा। दिस सो द mod or manner of the action indicate in the main verb। तो मॉडल वर्ड्स में आपका क्या क्या हो सकता है? मस्ट, कैन, शैल, मे, नीड, विल, शुड, कुड, माइट, वुड, डेयर एंड ऑट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब कंबाइन विथ द बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। फॉर एग्जांपल, यू मे गो लेटर, वी शैल वेट एंड सी। मॉडल वर्ब डू नॉट ऐड एस। इन मॉडल वर्ब्स में आपका एस ऐड नहीं होता फॉर द थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन रन नाउ, मतलब आप यहाँ पे ही कैन राइट नहीं करेंगे। ओके, ही माइट गो टुमारो, यहाँ पे देखिए ऐसा आप नहीं यूज करेंगे कि ही माइट्स कर दिया आपने। मॉडल वर्ब ऑलवेज कीप द सेम फॉर्म। दे हैव नो वर्ब पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव नो इंग फॉर्म्स आर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। जैसे अदर वर्ब्स की होती हैं आपकी क्या कहते हैं, ये इंग फॉर्म, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल, ऐसे मॉडल वर्ब्स की कोई फॉर्म्स नहीं होती। हाउएवर सम मॉडल वर्ब्स यूज अनदर मॉडल वर्ब्स एज अ पास्ट टेंस। फॉर एग्जांपल, लेकिन कुछ ऐसे मॉडल वर्ब्स होती हैं जिसको पास्ट टेंस में आप कुछ अनदर यूज करते हैं। जैसे कैन का कुड कर सकते हैं, सेल का शुड कर सकते हैं, विल का वुड। ओके, जैसे ये कैन का कुड, सेल का शुड, मे, माइट, विल के प्लेस पे वुड। ओके। लिमिटेशन ऑफ मॉडल वर्ब्स। Modal verb do not combine with auxiliary verb or with other modals. We cannot say I might must leave early, okay, or the child will can walk. We can bypass the limitation by replacing modal verb with other verb or modal combination. जैसे we can use be able to instead of can. For example, the child will be able, क्या राइट करेंगे? द चाइल्ड विल बी एबल टू रन सून। एंड वी कैन यूज हैव टू इंस्टेड ऑफ मस्ट। मस्ट के प्लेस पे क्या यूज कर सकते हैं? टू इंस्टेड। आई माइट हैव टू रीच अर्ली, आई हैड टू हरी, आई डू नॉट लाइक हैविंग टू पनिश स्टूडेंट्स। देन कैपेबिलिटीज ऑफ मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब कैन फॉर्म क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ सकता है मॉडल वर्ब में। जैसे कैन यू सी दैट स्टार, must these refugees be imprisoned, please would you change the covers. Model verb can form negative sentences. Okay, जैसे I cannot understand this problem, he must not take the criticism personally, students should not be encouraged to use full language. Model verb are used a lot in questions, tags and short answer. Okay, now that means model verbs आपका questions tags में भी use किया जाता है। जैसे you should not tell lies, should you? You must not be late, must you? Can you see that bird? No, I can't. He said he could drive, but he couldn't. Semi-modal verbs. The semi-modal verb are need, dare, ought used. They are the verbs which have some of the characteristics of main verb and some of the characteristics of modal verbs. जैसे dare and need are sometimes used with a to infinitive and sometimes with a base form alone. For example, dare to be different. I daren't tell him I need to look at a file on this desktop. We need not wait for her. They have verb parts like ordinary verb. For example, I walked to the edge, not daring to look over. I needed to speak to him. Ought and use do not change form.
but they are always used with to infinitive, as I ought to learn more grammar. I used to enjoy mathematics. Let us see how modal verbs are useful in English. Obligation, prohibition and commands. तो यहाँ देखिए क्या है, obligation is suggested by using the modals have to, must, ought to, or be supposed to. When someone else has to the authority, so you will say, for example here, Rita has to wash the classroom. When you have the authority, Rita must sweep the floor. When referring to a duty often not done, for example, Anil ought to put out the rubbish tin. For past duties, Sahil had to unlock the main gate each morning. For an unofficial arrangement, Ravi is supposed to signal when the teacher approaches. Prohibition is suggested by the using the modal must not, ought not to, and is not to. For example, Rohit must not swing from the door frame. Rahul ought not to write on the wall. Chitra is not to enter the class. Commands के लिए क्या है? Commands are formed by using positive imperatives. For examples, close the door. For a strong command, use be plus 2. For example, I said you are to close the gate. Permission and request. Permission is suggested by can, could, and may. For formal permission, use may. Father, may we go to the film? For less formal permission, you will use could. For example, excuse me, could you move aside, please? For informal permission, use can. ओके यहाँ देखिए मैं किसके लिए है, अगर आपको फॉर्मल परमिशन लेना है जैसे फादर से या फिर क्लास में, और अगर लेस है तो आप वहां पे क्या यूज कर सकते हैं, कुड। लेस फॉर्मल परमिशन है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, कुड। और इनफॉर्मल के लिए आप क्या यूज करते हैं, कैन। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई टेक योर पेन प्लीज। Requests are made using can or will. For casual request, could or would. For more polite or unusual request, for example, can you help me move the table? Will you come to the shopping with me? Could you open the window for me? And would you please meet Umang at the airport? Advice and necessity. Advice sentences are formed with should. For example, it is good college, you should go there. You should have for events in the past. अगर past का event है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, should have. We should have left the beach before the rain came. Necessity sentence are formed with need to. necessity वाली sentence हो गए, हम उसको कैसे रेडी करेंगे, need to का यूज करके. For example, we need to study calculus this year. When something is not necessary, you don't need to, don't have to या फिर need not. For example, today is Sunday, we don't need to go to office. Today is Sunday, we don't have to go to office. या फिर टुडे इज संडे वी नीड नॉट गो टू ऑफिस. ये तीनों फॉर्म्स में आप कह सकते हैं. पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एंड डिडक्शन. तो प्रेजेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटी सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड यूजिंग मे, माइट, कुड प्लस इन्फिनिटिव विदाउट टू. टू का यूज नहीं करेंगे. तो जहां देखिए क्या है, जैसे आई मे गो टू ऑफिस टुडे, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, आई मे बी गोइंग टू ऑफिस टुडे. सेकेंड, आई माइट गो टू ऑफिस टुडे, और I might be going to office today. Then I could go to office today. आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, I could be going to office today. Past possibility sentences are formed using may, might, or could plus have plus the past participles, as I might have gone to office last Saturday. I may have gone to office last Saturday. या फिर
I could have gone to office last Saturday. Probability suggested that something is likely to happen present or future. Probability sentence are formed using should or ought to. इसका यूज करेंगे should और ought to के लिए. जैसे I should be completed with the painting by 6 o'clock. I ought to have the breakfast ready by 8 o'clock. Daddy ought to be arriving at home any moment. Past probability sentences are formed using should have or ought to have plus past participles. For example, Shreya should have reached college by now. Something you think has happened but cannot confirm. कभी कभी क्या होता है, आप सोचते हो तो लेकिन कंफर्म नहीं होते हैं, तो उस कंडीशंस में श्रेया ought to have passed her pre medical examination last year. तो यहाँ पे क्या, समथिंग यू thought would happen but did not happen. Okay. Then deduction sentence in which we have got a good reason for believing something use must. So he does not touch meat dishes. He must be vegetarian. Okay. When we have a good reason for not believing something, use can't. For example, Rakesh can't have taken the snacks. He was in the bus. Offer suggestion and asking for advice. ऑफर आर मेड यूजिंग विल. जब आप ऑफर करेंगे तो वहां पे क्या किसका यूज करेंगे, विल का. फॉर एग्जाम्पल, आई विल क्लीन द होम इफ यू लाइक. शैल आई आर शैल वी आल्सो डिनोट एन ऑफर. ये भी आपका यूज होता है ऑफर्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल, शैल बी क्लीन द होम फॉर यू. आई कैन एंड कैन आई आर आल्सो यूज फॉर ऑफर. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन कुक द फूड इफ यू लाइक, या फिर कैन आई कुक द फूड फॉर यू. फॉर मोर फॉर्मल ऑफर्स, आई कुड या फिर कुड आई का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई कुड गो टू द मार्केट फॉर यू इफ यू लाइक. फॉर सजेशन एंड आस्किंग फॉर एडवाइस, यूज शैल विथ आई आर वी. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल वी विजिट योर ब्रदर आफ्टर द क्लास. What shall we do after the class? Suggestions can also be denoted as we can go next day if you want. We could tell your father about the incident. Habit is suggested by used to. Habit को किससे यूज शो करते हैं, used to, would and will. Used to and would are used for repeated or regular action in the past. For example, when I was young, I used to walk a kilometer daily. तो यहाँ पे देखिए क्या है, रेगुलर, ये हैबिट में है. ओके. In the morning, I would help my mother prepare breakfast. Will is used for a person's typical behavior. Now, he will wash his hair every evening. Okay. Models such as may, might, would, and could are used to discuss how much chance there is of something happening. They are normally used if we are not sure. जब आप श्योर नहीं होते हैं मैक्सिमम, तब आप इन सारे वर्ड्स का यूज करेंगे. Different models express different degrees: high, average, low, of certainty and obligation. Must, अब देखिए must का यूज कहाँ पे होता है, must not, shall, shall not, have to are used if we are certain about something. Okay. Are highly obliged to do or not to do something. Should, ought to या फिर could या would are used if we are not very sure, or if we are not really obliged to do something. Used to and would can be used to talk about habits in the past. Used to and would can be used interchangeably except with verbs which talk about feeling and thoughts as well as we and have. We cannot be would in such sentence. For example, Ria used to be my good friends. Okay. Grandmother used to have a
younger brother, I used to think that Santa Claus was a real person. To talk about regular habits, we should include adverbs of time such as each time, whenever, या फिर every time. To show doubt necessity or responsibility, we can use the model need. For example, do you need to train so hard for the game? Or we all need not worry about that yet. The model can is used to talk about ability while will is used to tell intention. To show anger or anyone, we can use the model dare. For example, don't you dare read my personal diary.